Sandeep ji, few of our chartered friend will refrain from this meeting. अदर चार्टेड लोग कम आएंगे लग रहा है. अच्छा ऐसा है क्या? लग तो रहा है ऐसा. ऐसा नहीं सर, चार्टर्ड लोगों को भी जरूरत है हेल्थ का. हेल्थ इज वेल्थ फॉर एवरीवन. फिर हम लोग का यूट्यूब में लाइव हो गया. हाँ हाँ, मैं लिंक कर रहा हूँ उसको फेसबुक से. फेसबुक में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है संदीप जी. नहीं प्रॉब्लम तो नहीं है. जा तो नहीं रहा है, यूट्यूब से फेसबुक में जा नहीं रहा है. मैं कर देता हूँ. नहीं होगा, नहीं होगा. देखिए आप यूट्यूब में गए आप. हाँ मैं यूट्यूब में हूँ अभी. वहां से कोशिश कीजिए. संदीप जी हो पाया क्या? हाँ कनेक्ट तो किया हूँ, देखता हूँ फेसबुक में जाकर हुआ कि नहीं. नहीं होता नहीं है यार. शेयर तो कर दिया था. आज तो प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे.
हाँ, फेसबुक में आ गया अपना टाइमलाइन में। गुड गुड, आइए सर फिर। टुडे वो सुरेश जी विल इंट्रोड्यूस, नहीं ये संजय जी, संदीप जी, हम बोले आज संजय जैन जी इंट्रोड्यूस करें, आज संजय जी इंट्रोड्यूस करें। ग्रेट, बढ़िया से संजय जी आ गए है ना? संजय जी नजर नहीं आए। संजय जी कौन सा आईडी है उनका? वेलकम वेलकम सुरभि। Hello, वेरी वेलकम। हाउ आर यू? I'm fine. How are you? वी ऑल आर फाइन, जस्ट वेटिंग फॉर आवर स्पीकर। आज तो एक्यूपंक्चर के ऊपर है ना? एक्यूपंक्चर एंड सुजू। Something different from what we do. या समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर डूइंग रेगुलरली। राजेश भैया वेरी गुड आफ्टरनून। राजेश भैया वेलकम। वेलकम वेलकम। हाउ आर यू सर? फाइन फाइन, बढ़िया है। लुकिंग वेरी स्मार्ट। थैंक यू। जस्ट वी आर वेटिंग फॉर आवर स्पीकर एंड फ्यू ऑफ आवर अटेंडी। अब कितने जन आए हैं आज? 14। अच्छा अच्छा, कुछ दो चार फोन करिए, हम भी कर रहे हैं, कुछ फोन करिए। कौन कौन आए हैं? आज बहुत कम लोग हैं। कम है, बहुत कम है। क्या सुरभि जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार सर, कैसे हैं? एकदम बढ़िया बढ़िया। कैसे निकाल रहे हैं टाइम? थोड़ा काम कर लेते हैं, थोड़ा काम घर कर लेती है। थोड़ा काम हो जाता है, थोड़ा घर का हो जाता है। ऑफिस का काम भी हो रहा है क्या? कुछ नहीं ऑफिस का भी हो रहा है, हो रहा है? काफी हो जा रहा है। काफी हो जा रहा है, पता नहीं बिकॉज क्लाइंट लोग ऑनलाइन है तो हम लोग का तो ऑलमोस्ट सारा चीज हो ही जा रहा है। अच्छा। अरे भैया वेलकम। अरे भैया, वेलकम। जय श्री राम। नमस्कार 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 भैया। दाढ़ी करवा लिए? एक मिनट हाँ? दाढ़ी ट्रिम करके स्मार्ट लग रहे हैं। लग रहा है ना? या फ्रेंच कट कर लिए क्या? गुड। हाँ, समथिंग डिफरेंट, डिफरेंट। गोइंग एज पर आवर मोदी जी। कमल साड़ा जी नमस्कार। इस समय में थोड़ा सा टॉक करते हैं, बाद में तो फिर लाइन चालू हो जाएगी। हाँ नहीं आता है पीछे में, ये सब बात करते निकल गया। साड़ा जी कहाँ बिजी हैं?
साड़ा जी कहाँ बिजी हो गए? केशव जी नमस्कार। केशव भाई। जोशी जी भी आ गए ना? हाँ जोशी जी आ गए क्या? जोशी जी दिख तो रहे हैं भाई, नाम तो आ रहा है जोशी जी का। कन्हैया बाबू भी आए हैं। जोशी जी तो बेचारे म्यूट हो रखे हैं, तो कैसे अब आपको राम राम करेंगे? राम राम जी, राम राम। राम राम। राम वेलकम सर। साड़ा जी आदित्य जी, राम राम। राम किशन जी, राम। संदीप जी, राम राम। नमस्कार सुदीप जी। कमल जी तो राम राम। कमल जी तो एकदम मालयशिया की याद दिला दिए, बढ़िया बढ़िया फोटो भेजते हैं। अरे वाह भाई वाह, एक दिन बैठे बैठे याद आ गया जब मैं कहा चलो। ओल्ड इज गोल्ड। देखो ऑल ऑफ सडन ही याद आवे जन मजा आवे ना। नहीं, आप लोग साथ में गए थे, ट्विन टावर का फोटो सब भेजे एकदम फर्स्ट क्लास। तो वो अचानक याद आया उस दिन, तो भेजा मैंने आपको। मैं देखते नहीं, देखते बढ़िया। भेज दिया। हाँ, बढ़िया किया। कन्हैया जी नमस्कार। वेलकम कन्हैया लाल जी अग्रवाल। वेलकम सर, वेलकम। जोशी सर जी फोटो राम नहीं आ राम। रही आपकी। जोशी जी राम राम। जोशी जी कहाँ है? आए, दिख नहीं रहे। हाँ नहीं दिख तो नहीं रहा। शायद उनका म्यूट किया नहीं। जोशी जी, हाँ, अनम्यूट कर दिया। निकल कैसे? राजेश भैया बंगाल की सिचुएशन बहुत खराब है। हमारे तो बगल में जीसी ब्लॉक में आज एक केस आया है। बहुत एमपी अगल बगल में आ रहे हैं केसेस। सॉल्ट लेक में बहुत केस आ रहे हैं। हरि भैया को थोड़ा एकदम हॉट सीट पर बैठे हो भैया हम तो। हाँ, हरी भैया तो एकदम ही हॉट सीट पर है। एकदम हॉट सीट पर है, कभी अगल में कभी बगल में, एक आध केस रोज निकल रहा है। तो एक वो आध जो कोई केस बच अभी जा रहा आया है। था जैन वाला, वो आपके सामने वाला गली में ही था क्या? हाँ मल्लिक फाटक मोड़ पर। मलिक फाटक में। हाँ एक और है आओ सर, क्या सचिया में देख लो यार। जयसवाल जी के। ओसतवाल जो लड़का था उसका तो यश ओसतवाल के बोल रहा था। नहीं यश जयसवाल जी के, ओसतवाल। राधेश्याम जी जयसवाल, वो तो वहां पर एसी मार्केट साइड में। सलकिया वो तो के पास। सलकिया, हाँ सलकिया सलकिया में है। में। वो नहीं नहीं, एक तो इनके यहाँ पर वो पापा है। कैसे मल्लिक फाटक मोड़ पर हो गया ना एक तो। यश ओसतवाल बोल के 22 साल का लड़का। ओ बाबा। जैन जैन बोल के। हाँ अपने मामा के यहाँ आया हुआ था पढ़ने के लिए। अरे आओ, बीकॉम सेकंड ईयर में था। यार और कन्या भाई राम राम भाई, सबको राम राम। सब बढ़िया से हैं तो? राम राम कन्हैया जी। राम 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 राम। एकदम बढ़िया में। अभी कन्हैयालाल जी खेला खिला रहे हैं महाभारत में। अच्छा ऐसा क्या? हाँ अरे भाई, मेरे नाम की महिमा ही अपार है भाई। जी राम। राम 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 राम। रामायण कंप्लीट हो गया, कन्हैया कन्हैया की बारी है। राम जी का सीरियल खत्म हो गया, अब कन्हैया जी का सीरियल की 4 बारी है। बजे का टाइम हो गया। कन्हैया जी का तो रोज ही सीरियल रहता है, सारा काम कन्हैया जी करते हैं। और कहीं जा रहे हैं करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करने वाले तो वही है ना, नाम कोई हो जाए, राम जी का हो जाए और कोई का हो जाए, करने वाले तो वही है। नंबर कम है भाई आपका। तुम करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो कन्हैया रहा और है। किशन में अंतर नहीं है भाई ज्यादा। चालू कर दीजिए ना। सांवरिया में क्या अंतर है फिर? वही तो सांवरियों में बात तो है, वही है यार। सांवरिया किशन कन्हैया किशन बराबर हो गए सांवरियो तीनों। और किशन हरि को छोड़ थोड़ी देंगे। कन्हैया। अरे हरि भी है, अलग नहीं है। अरे तो मैंने तो क्षीर सागर में बिठा कर छोड़ दिया थे लोग। अरे राम अवतार जी भी अलग कौन ही है फिर। मैंने तो क्षीर सागर में बिठा कर छोड़ दिया। राम अवतार जी भी अब एक अवतार है। संजय जी वेलकम। हेलो सर। वेलकम संजय जी। हेलो सर। संजय जी राम राम। राम राम जी। सर आप में फोटो नहीं आ रही है संजय जी, वीडियो। अच्छा वीडियो। वो चाहेंगे तब ना आएगा उनका। यस सर। सर वीडियो अब आ बड़ा रहा है, बढ़िया नहीं लगेगा वीडियो में आप? अब आ रहा है, अब आ यू रहा आर लुकिंग समथिंग डिफरेंट। जी हाँ, ट्राई कर रहा था कुछ चेंज करने का। वेरी डिफरेंट आउटलुक। जी लॉकडाउन इफेक्ट।
लॉकडाउन इफेक्ट। ये डेढ़ महीना और चल गया ना तो सबका देखिए बाबा जी बन जाएंगे सब। एकदम ठीक बोल रहे हैं आप। जामवंत बन जाऊंगा, जामवंत। राम तो नहीं, राम जी जरूर बन जाओगा। अपने स्पीकर आ गए क्या? नहीं, अभी नहीं आया। She will arrive within 1 minute. Welcome, Kamal ji. Yeah. Good evening. Welcome. Good evening. Just waiting for our speaker. Rathi ji is joining just right now. Pawan ji. पवन जी राम राम। नमस्कार, राम राम। जसवाल जी राम राम। राम 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 राम। अरे राठी जी दिखाई कौन दे रहा? राठी जी अभी आए थे। आशीष वेलकम। वेलकम। हाउ आर यू? बस एकदम ऑल फाइन। I think today's webinar will be benefited for all of us. जी। I think today's seminar will be interesting seminar. Something different. Yeah, something different for us. Yeah. Everyone is fed up with the gaining knowledge. Yeah. Seminar on the various topics: GST, income tax, valuations. तुमको आवाज थोड़ी आएगी। जी लोग आया बना सादर नमस्कार। भाभी जी लोग ने सादर नमस्कार। नमस्कार जी। पवन जी के साथ है, कमल जी के साथ है, दो पवन जी के साथ भाभी जी लोग प्रणाम। पवन जी अग्रवाल के साथ, पवन जी पायती जी के साथ। राजेश भैया आज थोड़ा अच्छा ये लग रहा है कि कुछ मैडम भी नजर आ रही है। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है। फर्स्ट लेडी ने बुला लो ना तो। हाँ, फर्स्ट लेडी ने बुला लो। शी विल कम। हाँ, कमल भैया भाभी कहाँ है? चालू होने दीजिए, आ जाएगी। ओके ओके। वो आ रही है। जी आ गया। राठी जी राम राम। राम 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 राम। पवन जी नमस्कार। नमस्कार। अरे बाबू अब चलो ठीक लग रही है। अब ठीक लग रहे तो? हाँ ठीक है, थैंक यू सर। करेक्शन करना ठीक होगा जी। करेक्शन डिफरेंट लग रहे हैं। हाँ आप तो एकदम डिफरेंट लग रहे हैं। Friends, our today's speaker. Welcome, madam. Thank you so much. I hope you can all hear me. Yeah, ma'am. Yeah. I was listening to all the wonderful conversation what you all are having. I was here with all of you since last 10 minutes. Thank you. And I'm really glad that I don't find that anxiety level in all of you. At least not the superficially, I cannot find it out. Thank you. May I request each and every participant to kindly mute yourself. संदीप जी प्लीज म्यूट करें सबको। यस। राजेश जी, राजेश भैया, I think all are muted right now. Now we can start our webinar. I welcome you all on this webinar. Health is in your hand. Dr. PRITEE GANATRA. I don't need any introduction, but as a formalities, I request our executive committee member Sanjay Jain to kindly introduce our today's speaker, Dr. PRITEE GANATRA. Thank you. Over to Sanjay ji. Thank you, Kishan ji.
It is my pleasure to introduce Dr. PRITEE Ganatra. Dr. PRITEE Ganatra is completely certified medical practitioner specialized in alternate medicine for over 20 years. She has completed her multiple qualifications at the early age stage in her career, which includes Bachelor of Science degree in the Foods and Nutrition, alternate medicines and chemical medicines, doctorate on honorary and biochemicals medicines, and individual diploma in neurotherapy, yogic science, and psychotherapy. She is a strong believer of continuing education in her quest for a higher level of professional excellence. Her wide knowledge and experience facilitate her to practice both individually as well as in hybrid manners. Chinese acupuncture, electroacupuncture, cosmetic acupunctures, particular acupuncture, neurotherapy, as well as cupping therapy based on the specific needs of every individuals, addressing the source of alignments rather than just for the symptom for a complete solution. She has treated thousands of patients from all over India, combining all the science at her disposal, right from infant to industrialist, even members of parliament for multiple ailments like diabetes, thyroid, hypertension, spinal issues, nerve and muscular disorder, gastrointestinal disorder, respiratory disorder, age-related issue, women's health issue like PCOD, cosmetic issue, and many more. Her clinic is often the last hope for many surgical and difficult cases, where each individual is treated with the same warmth and healing touch, which makes their belief in Dr. PRITEE and practice. She truly believes that many models disease have a metaphysical aspect which also need to be treated concurrently for a comprehensive cure, especially where more traditional forms of medicine fails to deliver. Dr. PRITEE is widely recognized in the domestic and international circle as well as accomplished members of medical fraternity. Amongst her various recognitions, she was awarded the Sujok Practitioners for the year in 2011 by the International Sujok Association and more recently with the FICCI Women's Achievers Award. Most importantly, she is admired by her patient not for the professional excellence but also for the human care she had. Her team at Sarojini Sujok Clinic offers, to which online reviews on Google stands testimony, making is more rewarding experience. Over to Kishanji. Thank you, Sanjay ji, for introducing our today's speaker. And I think we all will enjoy and will learn our today's speaker, Dr. PRITEE Ganatra. I also acknowledge the presence of our council member, Kashi Prasad ji Khandelwal. Kashi ji, namaskar. Namaskar. Thank you so much. Thank you. We are mute हो गए हैं auto. Anyway, I request our today's speaker. Kashi ji, over to you. I am perfectly all right and wish everybody to be very okay, very perfect. Stay home, stay safe. और आज ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस मौके पर ऐसे लॉकडाउन को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मौका मिलता भी नहीं है कि हेल्थ के लिए कैसे अपने ख्याल रख सकते हैं. एंड व्हेन वी हैव अ पर्सन लाइक प्रीति जी, it's good enough. It would be a good opportunity to all of us to listen to her. All the very best. Please. Thank you so much for requesting me. Please. Thank you, Kashi bhaiya. Thank you. Now I request our today's speaker to start his deliberation. Thank you. Over to Madam. Good evening, everyone. First of all, I would like to thank Mr. Kejriwal to give me this opportunity to serve mankind. And today's topic is health is in your hands. So how health can be in your hands? That is a really good question and a really good statement. I have done a lot of webinar before, and since some time now, I have been focusing more on the emotional health, which we really do not focus upon. बिकॉज हम जब भी हेल्थ के बारे में सुनते हैं तो हम सिर्फ अपने फिजिकल हेल्थ के बारे में सोचते हैं कि हमें कोई बीमारी है या हमें कोई तकलीफ है वगैरह वगैरह. बट हमारा इमोशनल हेल्थ हम कभी नहीं सोचते हैं. हम कभी ये नहीं समझते हैं कि हमारे इमोशंस भी हमारे शरीर के ऊपर टोल ले सकते हैं. एंड आज मैं कुछ एक ऐसी चीजें बताऊंगी जो हम सभी जानते हैं,
हम सभी ने उन चीजों को सुना है, एक्सपीरियंस किया है, बट हम अपने लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि हम ये सारी चीजों को बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं करते हैं। लास्ट में जब पूरा आप सुन लो तो मुझे जरूर से बताना कि मैंने जो भी बातें कही है, क्या आपने कहीं ना कहीं अपने जिंदगी में उस चीज को महसूस किया है या नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आज का जो टॉपिक है, हेल्थ इज इन योर हैंड्स। आज जो लॉकडाउन का फेज चल रहा है, जहां हम बाहर नहीं निकल सकते, मतलब रोज हम लोग ऐसे न्यूज सुनते हैं कि आज ये बीमार हो गए या इन्हें कोई तकलीफ, XYZ कोई भी क्यों ना हो, उन्हें कोई भी तकलीफ होती है तो आज हॉस्पिटल उन्हें लेने को रेडी नहीं है। और क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कोविड पेशेंट है या कोविड पॉजिटिविटी है कि नहीं है, दे डोंट नो, तो आइदर वो लेना नहीं चाहते। क्योंकि 3 दिन पहले ही मैंने एक मैसेज पढ़ा था व्हाट्सएप पे कि somebody lost his or her mother or father just because पेशेंट को हॉस्पिटल में लिया नहीं गया बिकॉज टेस्टिंग नहीं हुई थी। ऐसे में अगर हमें कोई एक्स या पेन्स या ऐसा कुछ भी होता है तो हम सबसे पहले हॉस्पिटल हमें ले ना ले, पर हम ही बाहर नहीं निकलना चाहते। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? तो आई थिंक एक एक्यूपंक्चर के लिए या एक सुजोक थेरेपी के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है जहां मैं इस बात को प्रूव कर सकती हूँ। अब जैसे ये कोरोना वायरस जो है, जो इतना फैला हुआ है, क्या सोल्यूशन है? कुछ भी सोल्यूशन उसका निकल नहीं पाया है। लेकिन एक ही बात हम सुनते आए हैं कि हमें हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा। एंड लेट मी टेल यू, दिस इम्यूनिटी इज जस्ट नॉट फॉर द कोरोना वायरस बट फॉर एनी काइंड ऑफ डिजीज, टू नॉट लेट दैट डिजीज एंटर आवर बॉडी। अब हमें पहले तो ये समझना होगा कि डिजीज अगर होता है, कोई भी तरह का डिजीज, डिजीज मतलब क्या? इट्स अ डिसईज, that is DISEASE, that is the dis-ease. Now do you know why am I segregating these two? Dis-ease of the mind reflects the symptom in the body. अब this is something to think about. अब अगर हम ये शुरुआत करें कि डिजीज होता कैसे है या कोई भी तरह का एक्स, पेन, डायबिटीज, थायराइड कैसे होता है, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी एंड हाउ इट स्टार्ट्स, उसके ऊपर पहले मैं फोकस देना चाहती हूँ कि एक डिजीज होता कैसे है। हम सभी जानते हैं कि हमारे दादा परदादा, हमारे एंसेस्टर्स हमेशा कहा करते, जो आज हम भी कहते हैं कि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर स्टमक। ये बात, मैं इस बात पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देती हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, ये जो आगे मैं बोलने चाह रही हूँ, मतलब मैं कोई भी वेबिनार में इस पॉइंट को मिस आउट नहीं करती। जैसे हम कहते हैं कि स्टमक से शुरू होता है। अब मैं यहाँ एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर हम घर पे कोई खाना बनाते हैं कोई यूटेंसिल में, फिर हम कोई एक प्लेट में वो खाना खाते हैं, उसके बाद वो खाना बनाने के बाद और खाना खाने के बाद अगर हम वही यूटेंसिल्स ऐसे ही छोड़ दें बिना क्लीन किए, will you prefer to eat or to cook in the same utensil the next day without cleaning? No. क्यों? क्योंकि हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं कि उसमें बहुत सारे कीड़े बोलो, मकोड़े बोलो, जो भी कुछ बोलो, गंदगी, वो हम देख पा रहे हैं, इसीलिए हम उसे क्लीन करना चाहते हैं। अब हम जो खाना खाते हैं वो थ्रू योर फूड पाइप इट गोज टू द स्टमक एंड देन टू योर इंटेस्टाइन, जिसे हम बड़ी आंत बोलते हैं। हम दिन में 3 मील हम लोगों का फिक्स्ड होता है, दैट इज योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और उसके बीच में जो कुछ खाया वो अलग। डू वी क्लीन आवर सिस्टम द वे वी क्लीन आवर यूटेंसिल? हम ये सोचते हैं कि एवरी डे गोइंग टू द लू इन द मॉर्निंग, दैट मीन्स आवर सिस्टम इज क्लियर। बट इंटेस्टाइन के अंदर इतना कुछ होता है, इतनी परत जमी हुई रहती है कि वहां पर बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ से हमारे बॉडी के अंदर डिजीज बनना शुरू होता है। उसके जैसे आप देखते हो, एक बच्चा जब बॉर्न होता है यूजुअली कंप्लीटली हेल्दी होता है, हर बच्चा अपने में हेल्दी होता है। And I'm not talking about these days
deliveries. I will come to this point also. What is the difference between the delivery of present age and the delivery of the past age? I mean जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने डिलीवरी की है और हम जो डिलीवरी करते हैं उसमें क्या फर्क है? That also I will come to know. So जहां मैं ये बात कर रही थी इमोशनल हेल्थ की, तो वहां मैं एक बात बताना चाहती हूँ. जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसे कहा जाता है कि बाहर का खाना मत खाओ और अच्छी किताबें पढ़ो, यानी कि आप भगवत गीता पढ़िए या रामायण पढ़िए या महाभारत पढ़िए या व्हाटएवर. हमने कभी ये सोचा कि ये दो चीजें ही क्यों बोली जाती है? हम कभी भी इस चीज के ऊपर ज्यादा नहीं सोचे हैं, बस हमें कहा गया है, हम करते हैं. Now let me tell you, हम ये बहुत अच्छी तरीके से, we all know one thing, that when we are carrying a baby inside us, हम जो सोचते हैं, हम जो बात करते हैं, हम जैसा देखते हैं, वो असर हमें हमारे बच्चे पे होता है. जैसे हम जानते हैं महाभारत में जो अर्जुन के बच्चे के साथ हुआ था कि वो अपनी वाइफ को कुछ सुना रहा था और सुनते सुनते वाइफ सो गई, तो क्या हुआ था ये हम सब जानते हैं. सो व्हाट वी हियर, व्हाट वी थिंक, व्हाट वी स्पीक, हाउ वी एक्ट, ऑल हैज एन इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड. तो हम जब बाहर का हमें खाना मना करते हैं तो क्या होता है, जब हम बाहर का खाना खाते हैं तो कौन वो खाना बना रहा है, किस थॉट के साथ वो खाना बना रहा है, ये हमें पता नहीं होता. और हम लोगों में एक कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन. द वे यू ईट द वे यू बिकम. इसलिए हमको बाहर का खाने मना करते हैं. So that means it has a direct effect on your emotions. अगर किसी ने गुस्से से खाना बनाया तो आपको गुस्सा आएगा खाना खाने के बाद. अगर किसी ने बहुत प्यार से खाना बनाया है, नो मैटर उसमें इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं भी होंगे, लेकिन इट विल बी वेरी टेस्टी फूड एंड विद दैट यू विल फील बेटर. अब जैसे हम देखते हैं साधु संत सारा सात्विक खाना खाते हैं जिसमें मिर्च मसाले कम होते हैं. So they feel all the time spiritual. जो नॉन वेजिटेरियंस, अल्कोहल, स्पाइसी फूड, स्टेल बासी खाना खाते हैं, they all have a very different energy in them. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हो. सेकेंडली, अगर हमें बोलते हैं कि हमें रामायण पढ़नी चाहिए या भगवत गीता पढ़नी चाहिए या महाभारत पढ़ना चाहिए, तो क्यों? बिकॉज हमारे अंदर एक विजडम आता है. कोई भी एक सिचुएशन को लड़ने की ताकत मिलती है हमारे विजडम से. हमारा इमोशनल हेल्थ साउंड होता है. You all must be thinking health is in your hands is a topic and why is she talking about all these things? Now let me tell you. जैसे कि ये सिस्टम जो है सुजोक थेरेपी, जिसमें SU मीन्स हैंड्स एंड JOK मीन्स फीट. आपके बॉडी की कोई भी प्रॉब्लम आप अपने हाथ या पैरों के द्वारा कर सकते हैं, जिसे हम करस्पॉन्डेंस सिस्टम बोलते हैं. और ये सुजोक थेरेपी या एक्यूपंक्चर आपके पंच तत्व के सिद्धांत पर काम करती है. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 5 एलिमेंट्स, दैट इज वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर. और इन्हीं पंच तत्वों से हमारा बॉडी बना हुआ रहता है. हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, इसके अंदर ये पंच तत्व रहते हैं. ये पंच तत्व, ये 5 एलिमेंट्स का जब इम्बैलेंस होता है हमारे शरीर में, तब हमें किसी ना किसी तरह की बीमारी हमारे अंदर पैदा होती है. नाउ एज वी ऑल नो, और मे बी सम ऑफ यू डोंट नो एज अ लेमैन, मैं बता देती हूँ कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं. हमारे शरीर में गॉल ब्लैडर, लिवर, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन, लंग्स और यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनी. ये हमारे शरीर में 12 प्रकार के मेन ऑर्गन्स हैं, जिसमें अगर एक ऑर्गन अफेक्टेड होता है तो इन अ सर्कल सारे ऑर्गन्स अफेक्टेड हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि एक का सिम्टम दूसरे के सिम्टम के साथ होता है. जैसे हम एक टीम में काम करते हैं, अगर एक का कुछ गड़बड़ हुआ तो फॉलोइंग सबका गड़बड़ होगा. अब अगर हम एलिमेंट की बात करें तो वुड एलिमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है गॉल ब्लैडर और लिवर को. अभी आवाज क्यों नहीं आ रही?
और उसका जो इमोशन होता है वो होता है एंगर। अब आप लोग सब अपने अपने लाइफ में अगर देखोगे कि जब आपको बहुत गुस्सा आता है तो सबसे पहला सिम्टम क्या आता है? एसिडिटी, एंड देन मे बी द हेडेक। सो व्हाई? गुस्सा आने पे एसिडिटी ही क्यों होती है? गुस्सा आने पे लूज मोशंस क्यों नहीं होते हैं? जस्ट बिकॉज लिवर प्रोड्यूसेस बाइल एंड गॉल ब्लैडर स्टोर्स दैट बाइल, पित्त, जिसे हम पित्त कहते हैं। इसीलिए अगर आपके शरीर में या आपके मन, आई मीन टू से आपके मन में या आपके लाइफ में अगर एंगर डोमिनेंट इमोशन है तो आपके गॉल ब्लैडर और लिवर ऑलवेज अफेक्टेड रहेंगे। उसके अलावा आपके शरीर के जितने भी मसल्स हैं उसको कंट्रोल करता है लिवर, और जितने भी जॉइंट्स हैं जैसे नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, फिंगर जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, एवरीथिंग, उसे कंट्रोल करता है गॉल ब्लैडर। प्लस हमारे शरीर में एनर्जी पाथवेज होते हैं जिन्हें एक्यूपंक्चर में मेरिडियंस कहते हैं। तो जैसे 12 ऑर्गन्स हैं वैसे 12 मेरिडियंस हैं जो उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर मेरिडियन, लिवर मेरिडियन, स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन, लंग्स मेरिडियन। तो वो एनर्जी पाथवेज होती है हमारे बॉडी में। तो अगर गॉल ब्लैडर और लिवर अफेक्टेड हुआ तो वो मेरिडियन अपने बॉडी में जिस भी जगह रन करती है वहां पर आपको ब्लॉकेज होगा और वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगा। तो वैसे ही हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन का इमोशन है जॉय। अब जो भी हार्ट पेशेंट होते हैं ना हम उन्हें स्ट्रेस दे सकते हैं ना उन्हें ओवर जॉयस होना चाहिए। डॉक्टर बोलते हैं एक्साइटमेंट हार्ट पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो एक्साइटमेंट गुड रीजंस के लिए हो, चाहे वो एक्साइटमेंट कुछ नेगेटिव रिएक्शंस के लिए क्यों ना हो। थर्ड इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसका भी जो एलिमेंट होता है, उसकी जो एनर्जी होती है या उसका जो इमोशन होता है वो होता है हैप्पीनेस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जॉय एंड हैप्पीनेस। आज अगर आपने कोई डील की, बिजनेस डील की, वो सक्सेसफुल हुई, यू विल बी जॉयस, दैट इज अ टेम्पररी जॉय। आज आपने वो कर लिया, आज आप खुश हो। अभी थोड़ी देर बाद अगर किसी ने कुछ आके कहा या कुछ और हुआ तो दैट जॉय विल गो डाउन। बट माई सेल्फ एज अ हीलर, अगर मैं किसी को ट्रीटमेंट देती हूँ और वो आके मुझे बोलता है कि आई वॉज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम सिंस लॉन्ग ईयर्स but your treatment has really helped me, I'm absolutely all right, that will be my happiness, contentment, और वो permanent होता है। So when the happiness is dominant, then the brain and the spinal cord, which is called the central nervous system, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि always try to stay happy, not joyous. Why? Because the central nervous system is the main system in your body, जहां से स्पाइनल कॉर्ड से आपके रूट्स निकलते हैं, नर्व्स निकलते हैं, विच सप्लाइज ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जो मेडिटेशन करते हैं, जो विपासना करते हैं या जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे होते हैं, दे आर ऑलवेज कंटेंट विथ एवरीथिंग। उन्हें तकलीफ, मतलब सिचुएशन उनके लिए भी वही होती है, हमारे लिए भी वही होती है, बट सिचुएशन से टैकल करने का तरीका दूसरा होता है। व्हेन दे आर कंटेंट, उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज इन कंप्लीट ऑर्डर, तो उन्हें शरीर में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। नाउ थर्ड इज स्टमक एंड फोर्थ इज स्टमक एंड स्प्लीन, जिसका इमोशन है एंजाइटी। नाउ आप लोगों ने सुना होगा कि जिनको एंजाइटी बहुत बढ़ती है उन्हें बार बार लू जाना होता है, लूज मोशंस होने शुरू हो जाते हैं, और वो कितनी भी दवाइयां ले फर्क नहीं पड़ता है। व्हाई? बिकॉज इट इज कंप्लीटली रिलेटेड विद द एंजाइटी। प्लस योर स्प्लीन इज एन ऑर्गन इन द बॉडी विच प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स एंड इट बूस्ट्स योर इम्यूनिटी। तो अगर आप कोई भी चीज करते हो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बट पैरेलली अगर आप एंग्शियस हो या एंजाइटी लेवल हाई है आपके बॉडी में,
तो आपका इम्यूनिटी कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, बिकॉज दैट ब्लॉक्स. Another thing, stomach and spleen represents or controls your mouth. आप सुनते होंगे कि मुंह में छाले पड़ जाना, ब्लिस्टर्स होना, तो हमारे बड़े क्या बोलते थे, पेट गर्म हो गया है. एंड दिस इज सच अ ब्यूटिफुल साइन, एंड वो होता है. तो एंजाइटी होने से भी होता है, पेट गर्म होने से भी होता है. Now let me tell you, as in the lockdown period, I run online clinic. So I was treating my cancer patient today. अब उन्हें आज हॉस्पिटल में कुछ टेस्ट के लिए जाना था, which she was adamant कि मुझे नहीं जाना है because I am suffering all the way from cancer, और अगर मैं जाऊं तो मुझे वो germs, वायरस लगने के चांसेस बहुत हो जाएंगे. और जैसे ही उसे एंजाइटी बढ़ी, उसके मुंह में ब्लिस्टर्स हो गए. एंड शी हरसेल्फ टोल्ड मी कि मैम, आई नो दिस ब्लिस्टर्स इज ऑल ड्यू टू माय एंजाइटी, व्हेन शी डजंट नो दैट एंजाइटी इज कनेक्टेड विद स्टमक. बट उसने मुझे बोला कि जब जब मेरी एंजाइटी बढ़ती है मुझे छाले पड़ते हैं. और हमारे प्रोफेसर पार्क, जिन्होंने सुजोक थेरेपी को इन्वेंट किया है, उन्होंने माउथ को स्टमक और स्प्लीन के अंदर ही दिया है. Your stomach and spleen controls your mouth. So I was just thinking that at every stage, I am learning a new thing, and whatever I have learned, whatever I have read, whatever he has invented, it's all so true. Then lungs and large intestine, it is connected with sadness. अब आप लोग देखना, जब भी कोई इंसान बहुत सैड होता है या सैडनेस उसका अच्छा, ऑन टॉप ऑफ दैट, सॉरी, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन कंट्रोल्स योर स्किन. अब आप लोगों ने देखा होगा विटिलिगो, विच इज द व्हाइट पैच ऑन द स्किन. समटाइम्स अ पेशेंट कम्स एंड सेज कि मुझे ये विटिलिगो हो गया. नाउ व्हेन वी इंटरोगेट, आई आस्क देम कि ये कब से है, तो वो बोलते हैं सडनली 1 साल से हुआ, पहले कभी नहीं था. बिकॉज या तो कोई चीज आप जन्म के साथ आए हो तब से होता है, या फिर वो डेवलप हुआ है. तो मैं उन्हें पूछती हूँ कि ऐसा कोई इंसिडेंस लाइफ में हुआ है जिससे आपको शॉक मिला हो, जिससे आप सैड हो. एंड बाय गॉड ग्रेस वो सही होता है, क्योंकि वो पेशेंट मुझे ये बोला, अभी हाल ही में एक मैं बताती हूँ, एक लेडी, शी केम टू मी विद सम व्हाइट स्पॉट हियर ऑन द फोरहेड. And she said suddenly it has developed. Then I asked her कि ऐसा कुछ हुआ है. She said कि 1 साल से हुआ है, and a year back I lost my father. And she was very very attached to her father. So ये जो sudden shock आता है जिससे sadness बढ़ता है, इससे आपका skin affect हो सकता है. And the last but not the least, that is your urinary bladder and the kidney, जिसके साथ emotion connected है fear. Now you all know this thing very well. एक बच्चा अगर डर जाता है तो वो bedwet कर देता है. So why bedwet? Why not the stool passing? Just because the function of the kidney is the filtration, and the function of the urinary bladder is to store your urine, hold your urine. So जब fear factor बढ़ जाता है तब bedwet हो जाता है. So don't you think कि health is really in our hands? अगर प्रोफेसर पार्क जे वू ने ये सब इन्वेंट किया है तो डेफिनेटली उन्होंने रास्ता भी दिखाया है कि हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं. बट वी आर सो बिजी इन आवर लाइफ दैट वी डोंट वांट टू हैव पेशेंस, एंड वी जस्ट रश टू द एलोपैथी एंड वी पॉप इन मेडिकेशन. आई एम नॉट हियर टू स्पीक either in favor of acupuncture, although I am an acupuncturist, and I am not in here also to say anything against of the medicines. Whatever is needed at whatever point of time, we need to do that. मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप एलोपैथी मत लो, सिर्फ एक्यूपंक्चर करो, या आप ये मत लो या वो मत करो. I am here to give you the facts of life. And then all of you need to decide कि कितनी चीजों को आप बिना दवाई ठीक कर सकते हो और कितनी चीजों में आपको दवाइयां चाहिए. बिकॉज आपकी एक एक दवाई, एक एक मेडिसिन
आपके बॉडी के अंदर इतने साइड रिएक्शंस पैदा करती है विच वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ। और जब हमें ये बात समझ में आती है तब तक बहुत सारे ऑर्गन्स डामाडोल हो चुके होते हैं। सो व्हाई नॉट वी थिंक इट फ्रॉम राइट नाउ। आज हम लॉकडाउन में हैं, आज हम सब अपने अपने घरों में हैं, लेकिन आज आप देखो कि हमने कितनी सारी चीजें लाइफ में मिस आउट की हैं। नाउ इट्स अ टाइम टू गेट बैक टू ऑल दोज थिंग्स। इन दिनों आप देखोगे तो रिवर्सल ऑफ डिजीज थ्रू फूड, अब लोगों को इसका अवेयरनेस हुआ है, बिकॉज दिस 5 एलिमेंट्स आर ऑल्सो देयर इन आवर फूड। हमारे किचन में जो मसाला का डिब्बा होता है उसके अंदर जितने भी स्पाइसेस हैं, कॉन्डिमेंट्स हैं, वो सब में भी ये 5 एनर्जीज है। लाइक मिर्ची, रेड पाउडर, दैट इज फायर एलिमेंट। योर मस्टर्ड इज योर वाटर एलिमेंट। योर टर्मरिक इज द अर्थ एलिमेंट। जैसे मैंने कहा कि अर्थ को रिप्रेजेंट करता है स्टमक एंड स्प्लीन, एंड इसका कलर है येलो। हल्दी इज योर अर्थ एलिमेंट। स्प्लीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी, और हम खुद भी जानते हैं कि कच्ची हल्दी इज वेरी गुड फॉर हेल्थ बिकॉज इट बूस्ट योर इम्यूनिटी। सो एवरीथिंग, अगर आप सब चीज को सोचो तो सब चीज एक ही जगह आके ठहरती है। सो नाउ let me tell you that how you can treat yourself. मैं कुछ एक बेसिक्स चीजें आज आप लोगों को सिखाऊंगी, और मैं आप लोगों को सबको एक बात जरूर से कहूंगी कि अगर एट द एंड आपको लगता है कि दिस सिस्टम इज रियली गुड, मैं ये जरूर कहूंगी कि सबके घर में से एक जन को इसका बेसिक नॉलेज या एक बेसिक कोर्स कर लेना चाहिए। एंड आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी यू कि आप जितने भी मेडिसिन इनटेक है आपका, उसका सिर्फ 1/4 हो जाएगा। दैट आई कैन गारंटी यू ऑन दिस। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज सुजोग थेरेपी। Su means hand and jok means feet. Now, as we all know, कि when we operate television, we operate it with the remote control. So this hands and feet are the remote control of our body. Now, if you see our body, we have this head, neck, trunk, 2 arms and 2 legs. If you see your palm, we have 5 fingers and a palm. Now, if I represent this as your head, so in the head, we have 2 divisions. One is face, one is neck. So one is face, one is neck. Then we have the trunk, and in the trunk, we have a diaphragm line. What is a diaphragm line? Diaphragm line divides the trunk into 2 parts, that is your chest and your abdomen. So below the diaphragm, we have chest, and in the chest, we have 2 organs, that is a pair of lungs, a heart, and breast. So if I tell you that this is my face, this is my neck, and this is the diaphragm line, which in astrology they call it as lifeline. Now, why this line is called the lifeline? That also I'll come to it. It is such a beautiful sign. Now, if this is the diaphragm line, we have a pair of lungs here and a heart. Now, where is the heart located? The heart is located on this line. That is why in astrology, this line is called lifeline. Fine. Now, if I see my hand like this, then this is the entire trunk. So this is your diaphragm line. Now, if I go this, here we have different organs. The organs which we have below the diaphragm, we have liver, gallbladder, spleen, pancreas, intestine, bladder, uterus, ovaries, fallopian tube, prostate in the male. And now, if I talk to you about the arms and the legs, so we have 2 arms, 2 legs. So altogether it is 4. So you see, we have 4 fingers. So these 4 fingers can be represented as arms and legs. Now, which are the 2 arms and which are the 2 legs? Now, if
अगर हम अपने हाथों को फैलाते हैं तो if you see, we cannot spread our leg if we are not the athlete. We cannot spread our leg the way we can spread our hands. So these in between these two fingers represent your legs, and these two fingers represent your hands. Now, if I do it like this, and if I divide this part goes towards my right side, and this part goes towards my left side. So this is the right hand, right leg, left hand. Now, God has made it so beautiful. We have never observed, but thanks to Professor Park J. Woo, who has invented this, in these 5 fingers, these 4 fingers have 3 joints, and only this has 2 joints. Now I said thumb is head. In the head, we have 2 joints. That is, 2 parts. That is the face and the neck. Here we can say this is the face and the neck. Secondly, in the hands, we have 3 joints. In the legs, we have 3 joints. What are the 3 joints in hands? That is the shoulder joint, elbow joint, wrist joint. So if you see, we have 3 joints in this finger. And it starts from this, the base of the finger, the joint which is at the base of the finger can be taken as your shoulder joint. So if anybody is having shoulder pain, you can treat in this area. You can either roll the ring or roll the pen. You can put some seeds, vagera, vagera. So these are the 2 hands. So when, as a layman, when you don't know which is the right and which is the left, do it on both the joints. Now, this middle joint is your elbow joint, because elbow is the middle joint in the arm. So this is the elbow joint. Any problem in the elbow, like say tennis elbow, golfer's elbow, anything, you can treat in this joint. And this is your wrist joint, which is the 3rd joint. So this joint, you can take it as the wrist joint. So any problem in the wrist, like swelling or carpal tunnel syndrome or anything, you can treat from this area. Likewise, if you see, if you have heard about the yin and the yang, yin and the yang is, if you have seen the symbol of the Doordarshan, where is in the darkness, there is a light spot, and in the light, there is a dark spot. This is yin yang. Now, if you see, the front part of the body is fairer compared to the back side, because when we are walking or when we are in the animal posture, our back is exposed to the sun. So our back side of the body is always darker in comparison to the front side. So this is the front body, this is the back body. Now in the arms also, if you see, the front side is fairer and the back side is darker. So the front side is fairer, back side is darker. See how beautiful. We don't have to remember anything. This is just in 1 hour, I'm just giving you as much as I can. But if you really learn the basics of this, you will get to understand many things in detail. Now, these are the 2 legs. In the legs, we have 3 joints. That is your hip joint or the pelvic joint, your knee joint, and the ankle joint. Now, I will say just focus on the leg more, because usually we have this knee joint problem, back pain problem, whatever it is. So the base of the finger is your pelvic joint or the hip joint. Knee is in the middle joint. So this middle joint will be your knee joint. अगर किसी को भी knee में problem है, you can roll a pen here, or you can take few seeds like moong seeds or the methi seeds and tape it here or here. If you have pain on the back side, press on the back side. I mean on the fairer side, if you have the pain, then you stimulate this area. If you have pain on the darker side, press it on this side. Likewise, these are the 2 legs, these are the 2 hands. Now, as I said about the spinal cord, because spinal cord I really need to focus on. Why? Because we are mostly on the laptop, our posture is not that good. On top of that, the fear is an emotion which is connected with the gallbladder, with the urinary bladder and the kidney. And in the beginning, as I said few minutes back, I told you that we have energy pathways in the body which is named after the organ.
So the urinary bladder pathway or the urinary bladder meridian runs on the back. So if somebody, and the emotion connected with it is fear. Now, in the lockdown phase, many people have fear of losing their job, fear of losing someone or something or whatever. You will find those people always will complain of the back pain because the fear emotion is very dominant. Now, how to treat? Where to treat? As I said, in the spinal cord, we have 5 sections. That is the cervical section, thoracic section, lumbar section, sacral and coccyx, that is your tailbone. जिसमें से 2 बहुत कॉमन स्पॉन्डिलाइटिस है, दैट इज द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड द लंबर स्पॉन्डिलाइटिस. सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो गले का होता है, गर्दन का होता है. सो दिस इज आवर स्पाइन. अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको ऊपर में पीछे में एक गड्ढा दिखेगा, दैट इज योर फर्स्ट C1. एंड इफ यू बेंड मोर डाउन, एक हड्डी उठी हुई पीछे मिलेगी. सो दिस इज माय थ्रोट एंड एट द बैक वी हैव नेक. सो दिस area, because this is the throat, and at the back this is your cervical spine. So anybody is having any kind of stiff neck or cervical spondylitis or anything with the neck में pain है, arms में pain है, because arms का pain can be a referred pain due to your cervical spine, then this is the area wherein either you massage it like this, or if you have a pen with you, then just roll it like this, and when you will roll it, you will really find it very tender, and slowly and gradually you move your neck and you see this is going to get better. After that, you have after C7 your thoracic vertebra starts, which is at the back of the chest. So if this is the chest, then इसके पीछे तो यही पार्ट आया. So this will be your thoracic vertebrae. तो अगर किसी को ब्रीदिंग इशू हो रहा है, किसी के हार्ट में पेन है, किसी को चेस्ट में पेन हो रहा है, गैस की वजह से चेस्ट में पेन हो रहा है, then you can stimulate this area, or you can put some seeds here, which we call the seed therapy, some मूंग का seeds or anything, you put it here and pressure it out. Because आप अपने हाथों से शायद उतना प्रेशर ना दे पाए, तो आप seeds लगाओगे, you will get really good pressure. Now, the third is the lumbar pain. Now, if you see the spinal cord, it is at the back. Back के ठीक center में spinal cord है, and then we have 2 legs down. So, if these are the 2 legs, so this can be your spinal cord. So, अगर किसी को भी lower back में pain है, तो you can stimulate this area. और यहाँ पर आप 4 या 5 pea seeds, I mean मटर के दाने, अगर आप यहाँ लगा लो, and keep pressing it, and you will find your back will be completely relieved. Now, if somebody is having headache, a headache can be here, anywhere. So this entire portion is your face. So this portion will be your forehead. This will be the back side of the head, and these will be the sides. So you can press these areas. So when you will press this area, your headache will start coming down. So now let me teach you few emergency treatments. If somebody suppose is getting the chest pain or the cardiac pain or angina pain, then this is the finger जिसे आप जोर से प्रेस करो, and if you are seeing the person is having a cardiac attack or something like that, जहां आपको पता है कि ये heart attack के symptoms हैं, and if you are calling your doctor and doctor will take some time to come, तब तक आप patient को कैसे बचा के रख सकते हो, या कभी ऐसा भी हो सकता है by pressing these points tight hard, डॉक्टर आएंगे तो बोलेंगे now the patient is absolutely all right. तो ये इस जगह को आपको बहुत जोर से प्रेशर देना है. Now I will tell you something about the high blood pressure. अगर किसी का प्रेशर excessively abnormally high रह रहा है या हो गया है, suppose due to any reason, say around 200, 180 like that, but this has to be done only in the crisis. When it is abnormally high, 180, 190 जब हो जाता है, तभी ये चीज करना जो मैं बताने जा रही हूँ. As high blood pressure is nothing but the
excessive flow of blood to the brain. So here I said that this is the face. So in the advanced level, your each finger represents the entire body. जैसे आप अभी जो मैंने बताया, that is just the basics. मतलब एक drop मैंने आपको दिखाया है acupuncture का, जिसमें मैंने कहा कि ये आपका face and neck है, and these 4 fingers are your arms and legs. But अगर आप इसको proper सीखते हो, तो the second stage will be each finger represents your entire body. तो ये tips जितने भी हैं, that will be your brain area. इसको आप सैनिटाइज कर लो अच्छे से एंड स्टार्ट प्रिकिंग इट. प्रिक एंड टेक द ब्लड आउट. ब्लड ऊज आउट करके निकलेगा एंड देन यू स्क्वीज इट. जब आप स्क्वीज करोगे तो यहां से ब्लड निकलना शुरू होगा. यू हैव टू डू इट इन ऑल द फिंगर्स. स्टार्ट फ्रॉम एनी हैंड, स्टार्ट फ्रॉम दिस फिंगर सपोज, या इससे करते हो, जहां से भी करते हो. गो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. कभी कभी ऐसा होता है कि थर्ड या फोर्थ फिंगर को जब आप प्रिक करने लगे, एंड पेशेंट विल टेल यू दैट आई एम फीलिंग मच बेटर, बिकॉज व्हेन द ब्लड शूट्स अप, व्हाट आर द सिम्टम्स? हेड हैवीनेस, फ्लश्ड फेस, आईज रेड, माथा बहुत भारी होता है. जैसे ही अगर आपने कोई मेडिसिन अगर बीपी की दी है, तो इट विल टेक least half an hour to bring your BP down, and the patient needs to sleep for some time. They don't want to get disturbed. अगर समझ लीजिए आपकी कहीं मीटिंग है या आपको कहीं कुछ प्रेजेंटेशन देनी है, उसी वक्त अगर ये चीज हो गई, how will you perform? So in those cases, if you do this within a minute, your pressure will come down immediately. But this should be done only during crisis. Why? Because you all are new, you all are layman in this subject. We professionals can handle it very well. Why? Because in some cases, the patients are on blood thinning medicines. So when you are on the blood thinners, we have to be very, very careful कि blood जब निकलता है तो वो बंद नहीं होता है जल्दी से. तो आप लोग जो मेडिकल लाइन में नहीं हो, दे विल नॉट अंडरस्टैंड देन हाउ टू कंट्रोल इट. वी नो दैट वेल. सो आप आस्ते से करना और ओनली ड्यूरिंग द क्राइसिस ही करना, उससे पहले नहीं. So within a minute, your blood pressure will come down normal, and you will feel as if you have taken some medicine, you have slept, and then you have got up. That fresh you will feel, and I'm telling you out of my own experience with this. Thirdly, another point, जैसे मैंने ये कहा कि ये टिप्स जो है ये आपके ब्रेन के पॉइंट्स है या हेड के पॉइंट्स है. In high fever, 104, 105, 103, and this is a proven thing. हमने बहुत सारे पेशेंट्स के साथ किया हुआ है. हम क्या करते हैं, हम कोल्ड पैक यहाँ देते हैं या सर धुलाई धो देते हैं. I mean, you just pour water on your head to bring the temperature down. The same way, what are you doing? You are putting that thanda patti here. Instead of that, take 2 bowls of ice chilled water. Ice chilled water लेके ये fingers के 10 tips को आप उस पानी के अंदर dip कर दो for a minute or 2. Take it out, again dip it. Take it out, again dip it. And after 15 minutes or 20 minutes, when you will check, you will find the temperature is low. Another thing, अब किसी को चक्कर आता है, आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपको लग रहा है कि मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं. What will you do? How will you take the medicine? You don't know the medicine. तब this is the point which is in between your nose and the lips. So this point, when you give strong stimulation here, then your chakkar will be absolutely all right. So these are all the emergency points. I will teach you now the painkiller point of our body. Now let me tell you this. Somebody has just now messaged me that he or she was suffering from the headache, and they have stimulated and he or she is better. We will ask that person later on. So now the painkiller point. We have all kind of points in our body. We have painkiller points, we have steroid points, we have oxygen points. Everything is in our body, and that is why we say the health is in our hands. So now if this
If you can see, this is the web between the thumb and the first finger. If you go down and open it, now this is the painkiller point of the upper part of the body. Upper part of the body matlab either headache, neck pain, shoulder pain, chest pain, वो सब में अगर आप यहाँ strong stimulation देते हो, immediately your pain will come down. So this is the painkiller point for the upper part of the body. Now, जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी जो ये वायरस पैंडेमिक हुआ है, उसके सिम्टम्स क्या है? उसके सिम्टम्स है आपके थ्रोट में पेन होना, आपकी चेस्ट में कंजेशन होना, लंग्स में कंजेशन होना, देन टेम्परेचर होना. So what should we stimulate so that we can feel better? और उसमें आपको ब्रीदिंग इशू होते हैं. So if you lie down straight in a supine position मतलब सीधा लेटना. सीधा लेटने के बाद जब हाथ आप अपना ऐसे करते हैं तो योर नोज टचेस अ पॉइंट इन योर आर्म, अपर आर्म. तो आपका नाक जिस पॉइंट को टच करता है उसे अगर आप प्रेस करेंगे, द ऑक्सीजन फ्लो इन योर बॉडी विल इंक्रीज. अगर आप में से कोई भी एस्थमा पेशेंट है, अगर वो अभी यहाँ पर इस पॉइंट को प्रेस करेंगे तो दे विल फाइंड इट टेंडर. आइदर एस्थमा पेशेंट और किसी को स्किन की कोई प्रॉब्लम है, आप अभी देख सकते हो अपना इस पॉइंट को प्रेस करके, इट विल बी वेरी वेरी टेंडर. नाउ this is all what I have taught you about the emergency thing. The other thing which I want to tell you about is like diabetes, hyperthyroidism. हम समझते हैं कि diabetes is a lifetime disease, but I tell you, diabetes is completely reversible, and we in our clinic, Sarojini Sujo Clinic, we have reversed diabetes of various patients. जहाँ पे पेशेंट दिन की 6 मेडिसिन लेते थे, they have, and since last 30 years now they have come down to 0 tablet and they are eating all kind of food, because we here combine naturopathy, acupuncture and food. The first and the foremost thing which I would tell all of you is to detoxify your body once in 3 months. That is a must. And diabetes is a completely reversible disease. Now I'm going to show you few points for few diseases, and then we will come to an interactive session wherein you will all raise your questions and I will answer you all as much as I can. अगर किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत है तो लेफ्ट हैंड में ये एरिया विच इज द माउथ एरिया, यू कैन से लास्ट उंगली के पैरेलली ये एरिया, अगर आप उसको प्रेस करेंगे then definitely you will have lot of relief in your gas. First thing. Second thing, if you all or if anybody is suffering from acidity or the heartburn or the chest burn, या समझ लीजिए यहाँ पे इस सेंटर लाइन में आपको बर्निंग सेंसेशन है या कुछ भी है, so what do we do? बर्न जब होता है, जब एसिडिटी होती है तो वी से कि ठंडा दूध पियो, राइट? सो दिस एरिया व्हाट इट नीड्स कोल्डनेस. तो अगर मैंने ये बोला आपको कि ये फेस है, ये नेक है, ये आपका चेस्ट है, so that food pipe is from here and it goes like here. So जो भी acid reflux होते हैं, जो भी burning होती है, वो इस एरिया में होती है. So here you can draw a straight vertical line with blue color because blue represents your coldness. Blue is the color of coldness. So आप यहाँ पर blue color कर ले या आप यहाँ पर ice apply कर लीजिए. Immediately I am telling you, within 30 seconds to a minute, your acidity will run away like anything. But these are all I am just telling you. But I would say one thing: don't give chance to any disease to enter your body. People who are suffering from gas and acidity or say digestive disorder or say
constipation or diabetes, these are the metabolic disorders. How we can prevent it, how we can be saved from that. आने के बाद तो हमें ये करना है, but आने नहीं देना है, तो कैसे नहीं आने देना है? The first and the foremost thing, आप जो भी खाना खाओ, कुछ भी, even when we are taking the weight management program in our clinic, I tell my patients, I will let you eat everything and anything. ऐसा नहीं कि पिज्जा मत खाओ या पास्ता मत खाओ, because I'm a very practical person. I will deal with my patient very practically, because if somebody tells me, don't eat this for a lifetime, don't eat that for a lifetime, I may not be comfortable, but there has to be a way. Like जब भी आप खाना खाते हो, उसे chew करो, proper chew करो. एक bite को theoretically we say 32 times, but practically you should chew it for as many times as you can, 15 times, 16 times, 17 times. And I assure you that you will start losing your weight. Because your first process of digestion starts in the mouth. सलाइवा मिक्स होता है, बट हम इतना जल्दी खाते, कोई जन 2 मिनट में खाना खत्म कर लेते, 3 मिनट में खा लेते, तो देयर इज नो डाइजेशन. व्हेन देयर इज नो डाइजेशन, there is no assimilation, then there will be gastric and acidity and everything. And as I said in the beginning of this session, that when gas and acidity is there, your gallbladder and liver is affected, and when the gallbladder and the liver is affected, your muscles and the bones of the body gets affected. So no matter how much you have this rheumatism, baat ka darad, arthritis, if you really want to treat your arthritis, stop all the dairy products, stop your maida, and chew slow. And take some food which is very healthy, which is like say haldi, which improves your immunity. And if you cut down on the dairies and the maida, I guarantee you, your arthritis will slowly, it will get better. Because I have a very important question here to all of you. Whoever is suffering from arthritis, and when you go to a doctor, they prescribe you in the diet that have chana, have paneer, have this, have that. Now you all tell me, because doctor बोलते हैं आप में कैल्शियम की कमी है, आपको ये सब खाना होगा. Now I tell you कि when you go to a doctor for arthritic pain, do you know any person who has referred an allopath and who has recommended this diet? And if they are taking this diet, is their arthritis reversing, or are they feeling better, or it is deteriorating day by day? So this is what all I wanted to tell you, that chew slow and see the change in your life and change everywhere. Now, if I will keep on talking and speaking like this, I have many things to tell you, but I think there won't be an interactive session later. So all of you are welcome to raise all your questions, and I will be able to, if as much as I can, I will respond to all your questions. Thank you, madam. Thank you for your detailed discussion on this acupuncture. Ma'am, एक चीज लोगों को बड़ा confusion करती है कि acupuncture और acupressure, 2-3 मेरे पास टेक्स्ट आ गए कि what is the difference between acupuncture and acupressure. हमारे बॉडी में जितने भी पॉइंट्स हैं, उसमें जब हम निडल प्रिक करते हैं, विच इज नॉट पेनफुल एट ऑल, क्योंकि हम बच्चों को भी निडल देते हैं, तो उसको कहा जाता है एक्यूपंक्चर. कुछ उसी जगहों पर जब हम लोग, जैसे अभी अगर मैं ये ऑनलाइन क्लिनिक कर रही हूँ जो इन लॉकडाउन में, तो आई कैन नॉट गिव नीडल्स लाइक दिस. तो मेरे रेगुलर पेशेंट्स जो हैं, जो जानते हैं कैसे करते हैं, उन्हें मैं एरिया बताती जाती हूँ, उन्हें बोलती हूँ यहाँ ये सीड्स लगाओ, यहाँ ये सीड्स लगाओ, एंड दे टेल मी दे आर मच बेटर. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द acupuncture and the acupressure. And two things which I wanted to show you, which I forgot, sorry. Now let me tell you this, and then we go to the question answer session. To improve your immunity, this is the spleen organ stimulated दिन में 3 से 5 बार 5-5 मिनट तक. Okay. Another thing, to prevent yourself from this coronavirus attack, this is the trachea, that is your windpipe, trachea, or these are the lungs. इन्हें आप अच्छे से स्टिमुलेट करें दिन में 3 बार 5-5 मिनट तक. और एक मुद्रा आप लोगों को करनी है, which is called लिंग मुद्रा. लिंग मुद्रा is nothing. Keep your left hand like this, spread the fingers,
राइट हैंड की उंगलियों को आप लेफ्ट हैंड की उंगलियों में इंटरलॉक करें और लेफ्ट हैंड का अंगूठा ऐसे बाहर निकालें। दिस इज योर लिंग मुद्रा। ये लिंग मुद्रा करने से आपके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जितने भी हैं, जिसमें एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सर्दी, खांसी, ये सब में फर्क आएगा। सेकेंडली, इट इंक्रीजेज योर बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ता है तो कोई भी वायरस आ नहीं सकते, क्योंकि हमने पहले भी सुना कि कोरोना वायरस कोल्ड कंट्रीज में ज्यादा है, और हम ये भी सुनते आए हैं कि जैसे जैसे धूप बढ़ेगा ये कोरोना वायरस उतना जल्दी चला जाएगा। सो इट इंक्रीजेज योर बॉडी टेम्परेचर। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट इज द लिंगा मुद्रा। एंड अनदर मुद्रा विच आई एम गोइंग टू शो यू, इट इज वेरी गुड फॉर शुगर एंड फॉर योर डाइजेशन। दिस इज कॉल्ड अपान मुद्रा। ये मुद्रा अगर आप दिन में 3 बार 15-15 मिनट तक होल्ड करके रखेंगे, एंड देन ऑल ऑफ यू हु एवर हैज शुगर इश्यूज, डायबिटीज इश्यूज, I don't know without the treatment, but with this and proper chewing of the food and a little bit care with your diet and your walk, your sugar level will come down for sure. Now let us go to the question answer session. Thank you. Thank you. And now I request our executive committee member, Survi Bora, to kindly raise all the questions and read out it. Thank you, Over to Survi. Yeah. Thank you, ma'am, for such a wonderful class. Thank you, was Survi. very refreshing and a lot of things we learned. I've got a few questions which have Yes. been posted. So I'm just putting it across to you. The first question is, how will you get a relief from a migraine headache? Okay, so migraine is nothing but it is the excessive amount of gas in the body. So the thing is, proper sleep is needed, proper food is needed. Another thing is, this point one needs to stimulate on a regular basis so that the migraine attacks does not come. But when you are already in the migraine, then you can press this thumb, and likewise all the tips of the fingers with this, and as I said, this is the painkiller point for the upper half of the body. But don't treat migraine just like it has come, so I'm treating. But for the precaution for the migraine, keep your stomach clean, because constipation is one of the basic root cause for the migraine. Next one. Ma'am, next question is, how to control bad cholesterol? How to control the bad cholesterol? Because bad cholesterol, all the cholesterol is nothing but the problem with the metabolism. So you need to treat the entire digestive system, which again, if you will listen in my all answers, it all comes from your stomach. So you should not be constipated, first of all. Secondly, this area of your finger, roll the pen every day here, because this represents your entire abdomen, wherein you have all the organs, liver, gallbladder, pancreas, spleen, and everything. Okay. Thank you, ma'am. Your next question is, what is the treatment for tennis elbow, or pain beside shoulder blade? Okay, so somebody has asked which hand to be stimulated. Any hand you can take it. Now the question was, sorry, can you repeat it, Surbi one? Yeah, I'll repeat it. It's what is the treatment for tennis elbow or pain beside shoulder blade? Okay, if you have the pain besides shoulder blade, then this area, see, if you can see this, if you draw a straight line here, then the sides of those that straight line, you can stimulate it for your shoulder blade first, or else you can roll the pen on any finger on this area. So that means it is between the first joint and the second joint. Just stimulate this area and your shoulder blade pain will go down. And for the tennis elbow, if it is in the right elbow, then treat the first finger of the right hand. If it is in the left elbow, treat the left, treat it in the first finger of the left hand. The middle joint represents your elbow. The another thing is, what is the pressure point for kidney? The pressure point for the kidney, as in our body, the kidneys are located between the thoracic 11 and the thoracic 12 vertebrae, which is just below the 2 fingers down below your diaphragm line. So if these are the 2 legs, then if you go straight up
till here, these are the kidney points. You can put the Rajma seeds here to have better results, because Rajma is nothing but the kidney bean. Next question is how to reduce ranging around 140 to 190. Sorry? How to reduce blood pressure ranging around 140 to 195. Okay. So see, as I said that during the crisis, you can do the bloodletting therapy, but you cannot operate this bloodletting therapy on a daily basis. So what you can do is this portion, this entire portion of your thumb, you paint it with the blue color. So when you paint this with the blue color, your pressure will gradually start coming down, because it represents your cold color, cold temperature. Ma'am, for heart problem, which hand should we use first? The first better to use is your left hand, this finger, and then you can put the pressure point here also. Ma'am, for they have question for constipation, for sleeplessness, and for thyroid. Okay, for the sleeplessness, I would say sleep is nothing but the temporary death to the brain. When a patient or when a person is permanently dead, then they cannot get up. So death is nothing but the coldness. When a person dies, you will see that the body of the person is becoming cold. So the color of the coldness is color blue. And what happens when we don't get sleep? Our mind is restless. So we need to cool down your mind. We need to give the temporary depth to the brain, so that, brain stops thinking about certain things and you can fall off asleep. So as I said, your each finger represents your body, and all the tips of the fingers represents the brain part. So if on the tip, just put blue color. I'll just put it one and I'll show it to you that how you can all do it. Like this way, if you can all see, this way you have to put the blue dot on all the fingers. Just color the tips of the fingers with the blue color. This is for the sleeplessness. Another thing is thyroid. I think somebody asked about the thyroid. So thyroid is a gland which is located in the throat, center of the throat. So this is your throat. So this area one needs to stimulate, or you can put red color here, so that you will be able to control your thyroid gland. And third question was the constipation. So this point, this is from the second joint of the thumb, and this is the lifeline, as I said. From corner, if you draw a straight line from second joint till here, then this center point can be treated for constipation. You can just take one pea seed and put it here and keep pressing. Whoever is constipated, if they will press here, they will have a lot of pain in this area. It is a very, very tender point. You can all see that. Ma'am, the next question is, how will you activate pancreas more effectively? Okay, so for the pancreas, this is the area which treats your pancreas. So you can stimulate this, and the people who are diabetic, to them I had shown this mudra one, and the right hand, little finger, the nail is nothing but the pancreas chakra. So you color this fingernail with yellow color. यहाँ पर आप येलो कलर लगा के रखिए. राइट हैंड छोटी वाली उंगली के नाखून में, नॉट ऑन एनी अदर हैंड, ओनली इन द राइट हैंड एंड ओनली दिस फिंगर एंड ऑन दिस नेल. जस्ट पेंट इट विथ येलो कलर. Ma'am, how to treat swelling in the knees? Swelling in the knees. See, as I told you, this basics which I have just given you a drop of the ocean. I have just showed you the drop of an ocean. It is an ocean. So for any kind of problem, if I go from the basic point of view, this is your knee. So you can stimulate this. But see, for the swelling, for any kind of fluid problem, fluid retention, we call it bursitis, or there is osteoarthritis, definitely you need to go to the further level in acupuncture, which can really treat your knee. But as a layman, like sitting back at home, if you want to help yourself, then just press this area, because this is the knee, and press this area because this is your lumbar sacral spine, which supplies blood to the knee. And this is a question which most of us will relate to, because since we work a lot on laptops and computers,
So this question is for 10 to 12 hours, if someone is sitting on a laptop without a major break other than the lunch, and there's some back pain and feel of dizzy of eyes and all, then how to cure that and how to keep your body more active and perfect for. Yes, because when you are sitting on the system for a longer period of time, say 10 hours, 12 hours, then what happens? The two things which gets affected mostly is your cervical spine and your lumbar spine. So lower back pain, you can treat it from here. Okay, what you can do, you can either put seeds here and while walking, you can press a little in between, or else you can roll a pen here. That you can do. And as you said about the eyes, the nerve which supplies blood or the energy to the eyes is from your cervical spine. So why the eyes are getting affected? Because you're constantly seeing over the screen, plus your cervical also gets affected. So if you press this area, your cervical will really get better. Along with it, you will have a change in the eye. Ma'am, and there's one more question. Someone has a numbness in their fingers because of tennis elbow or lumbar pain. So how to cure that? See the lumbar pain, numbness in which fingers, like in the hand fingers or the toes? If it is in Fingers. the toes, if it is in the toes, that is the leg fingers, that is due to the lumbar and the sacral spine. And if it is in the fingers, the hand fingers, then it is due to the cervical spine. So the cervical spine radiates, cervical nerves radiates to the arms. So it supplies blood to the shoulders, blood to the elbows, and blood to the fingers. So in those cases, this can be the referred pain. There is no separate treatment for this, but you need to really focus on your cervical spine to heal this from the core. Because we in acupuncture, we don't want to focus on the symptomatic treatment. That today you have come with the acidity, as in allopathy, we give them the antacids or something like that. And the next day, when you are coming with some other thing, we give you some other medicine. So for this tennis elbow person or the numbness in the fingers, it is due to your cervical spine. So you better focus on this area, and for the elbow, this area. When you do these two things, it will really treat your fingers also, your cervical spine also, and your elbow also. Ma'am, is there any way to treat anger? Yes, we have a treatment to treat anger also. Now, as we all know, our navel, that is our nabhi, when we were fetus in the fetal condition, like when a lady is pregnant, the baby eats all the food through that cord, right? So the nabi or the solar plexus or the navel, whatever you call it, it is the reservoir of your energy. All the energy comes out from there. In our palm, the center point is your nabi. Okay, so what you need to do, if you are very angry, or if you are, say, feeling low, if you are feeling depressed, if you are feeling too tired, then this point, we in the clinic give moksha. Moksha, that is MOXA. Moxibustion is a therapy in which we do nothing but we give heat here. We got a herbal stick there. But in your at your place, if you have the dhoop or the agarbatti or anything, just lit it up and show that heat. Suppose if this is the dhoop, you don't need to touch it. You just have to keep it at a distance, and this area should feel the warmth. So in these two areas, you need to do that, and directly on the navel. If you do it for 5 minutes on the navel, and after 5 minutes, you see all your things will come down. Okay, ma'am. Ma'am, after this wonderful session, I have a lot of queries. Who want to know your contact point? How can they contact you and how can they visit you? And I would just say one thing to you. If in this condition, like just as I want to just say one thing, when I was giving my this views and everything, I showed some point for the headache, and somebody immediately messaged that I was doing it and I'm feeling much better. If listening to me for 10 minutes and you can come out of your headache, you don't have to take topic or Saridon or anything like that. Don't you all think if you learn it, then what not can happen? So I would just say, आपके घर में से हर एक के घर में से सिर्फ एक जन को ये सिखा दो, and you will see wonderful results at your place.
There's one query regarding that, how to do the course and what is the procedure for that. Okay, I will just do one thing to Mr. Kejriwal. I will pass on the number. We are running the online sessions. I have just finished with my first batch and it is a certified course. And from the next week, I am going to start with my second batch. So if anybody is interested, can contact there. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am, for the wonderful session and for answering all our queries. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. I think most of the question has been taken by Survi and already answered all the questions. Any questions left? I think one question has been left. Yes. By Keshav Daruka. Point of liver, ma'am. Okay. So this is the point of liver and gallbladder. Okay. So simulate this point, and let me tell you, if you go to Google and if you find out about, see, this is, I am not telling you to promote myself. I am having, by God's grace, number of patients. Why am I telling you? Just go there and see the reviews of the people. What I want to tell you, even if somebody is suffering from fatty liver or second stage of, see, like hepatomegaly, that is the liver is getting enlarged, then second stage of fatty liver and everything, all can be reversed back. And we have proof in our hand. That is why I am so confidently telling you, because we tell the patients to go for the sonography before we keep pre and post both the reports with us. So even if the PCOD, even if your liver issues, even the stone in the kidney can come out in 3-4 days. So when we have such wonderful things in our hand, why should we give ourselves to those things which first of all does not cure you? Allopathy is very good system for managing your disease, right? It manages your disease. And acupuncture or Ayurveda, and these all are things which heals you completely. Why? Because it works on the physical as well as the metaphysical level. So when the emotions are also controlled, then all the organs can be controlled. So this is the point for the liver and the gallbladder. And as I said, when we go to the different fingers, in any fingers, in any hand, this area, if you stimulate, then you can treat your liver, gallbladder, stomach, spleen, pancreas, everything. Thank you, ma'am. Thank you once again. आपका जो सेशन है ये वंडरफुल है और थेरेपी है. आई थिंक दिस इज मिरेकल. मैं तो इस थेरेपी का बहुत बड़ा फैन हूँ मैम. I seriously tell you to just have a look on that, because if I am going to forward you, Mr. Kejriwal, one video wherein one of my patients has turned completely non-diabetic, where the diabetic was for past 30 years. And when we started with the treatment, I asked him, I need your 4 months. He said, I will give you my 120 days subject to if you give me the entire life to eat anything and everything. I said, done. And we have shooted this video after 1 year of close intervention, like every 3 months we used to check his HbA1c after eating everything, because during the treatment it may happen that the sugar level is low, but once you leave it, then there is a question ki wo bhar jayega. So after 4 months of successful treatment, we stopped the treatment and gradually he started tapering the medications. And then every 3 months we used to check his HbA1c level, and every 3 months it used to be between 5.5 and 6. Initially, he joined my treatment with 9.8 HbA1c, wherein he was taking 6 tablets. Now, no tablets and nothing, and he's eating everything, but the sugar is reversed. So, when we can do it, I just want to make people aware. Go to any acupuncturist. It's not that you need to come to me. Go to any acupuncturist. Give yourself to acupuncture. Have patience. Follow what they say, and then you see. You will definitely find a miracle. I can write you on a piece of paper, because I am telling you all these things so confidently just on my clinical experience with my patients. Yeah, ma'am. Loharuka ji, Pawan Kumar Loharika ji want to say something. Yes. Hello. Loharuka ji. Yes, Mr. Loharuka. हाँ, नमस्कार मैम. नमस्ते.
मैं भी एक्यूप्रेशर की प्रैक्टिस करता हूँ। वेरी नाइस। और मेरा परिचय सुमन भाई से और आपकी मदर इन लॉ से मीता जी से है। नहीं, वो मेरी मदर इन लॉ नहीं है। वी बोथ होल्ड द सेम टाइटल। वी आर सुजोक रिलेटिव बट नॉट रिलेटिव। ओके ओके ओके, उनसे है और सुमन भाई से है। मैं 25 वर्ष से कर रहा हूँ। ऐसा स्वेलिंग नी के लिए मैं फ्लेक्सी सीट भी यदि रेपे करता हूँ कॉरेस्पॉन्डेंस पर, तो उसका भी रिजल्ट आता है। हाँ जी, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत ही अच्छा आता है। फ्लेक्सी दी तो ये मैं जानकारी के लिए दिया है, कॉमन अपने कॉलेज के लिए। ऐसे प्रिंसिपली मैं इनकम टैक्स प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन ये भी 25 वर्ष से कर रहा हूँ मैं। वेरी गुड, आई एम रियली हैप्पी एंड आई वुड से कि आप वो प्रैक्टिस छोड़िएगा मत, उसको कंटिन्यू करिएगा। नहीं, कंटिन्यू है। आई एम आल्सो रेकी मास्टर। थैंक यू पवन जी। संदीप जी, ओवर टू यू। संदीप, यू वांट टू से एनीथिंग? बहुत अच्छा रहा आपका। मेरा आज सुबह से थोड़ा सा हेडेक था, मैंने जस्ट वो टिप ऑफ द थंब को प्रेस किया और काफी रिलीज हुआ हेडेक। I'm really happy that you treated yourself, and see, it's just 5 minutes and you cured your headache and you got saved from taking a pill which could have a side effect on your knees in the later years. No, our executive committee member Hare Ramji Agarwal, and he is also our member Eastern India, to kindly give vote of thanks to our speaker. Thank you, Convener Kejriwal ji. Thank you, sir. Ma'am, before I give you a vote of thanks, मेरा query था which could not be slated. जैसे अपने clapping करते हैं, तो clapping में सारे point का ही तो pressure हो गया. तो whether instead of pressing here and there, if we clap for some time, say 30, 40 times or 50 times, or how many numbers of times, यदि अपने clap करते हैं, so how it is helpful or how it can be replaced with your pressing the different parts? Okay, so as I said, for different body parts we have different correspondence system. Correct. But in general, अगर हम बात करें कि हमें general health चाहिए, so general health में this entire palm represents your body, right? Correct. So sometimes it is not possible to press all the points. So clapping, when you clap it, your each point gets stimulated. And जब आप clap करते हो, so there is a friction there, you know, और वो friction से आपका blood circulation काफी improve होता है. So, but there are some people who feel very awkward to say clap or something like that. But अगर किसी को hesitation अगर नहीं हो, तो दिन में 3 बार या 2 बार आप maximum time जितना clap कर सकेगा, अगर आप clap करो, then you feel much better. तो इसमें कोई restriction or limitation है कि 30 times, 40 times, 100 नहीं, times? there is no restrictions and no limitations because you are playing with the energy of your body. इसका blood pressure से या कोई relation है directly indirectly? If somebody is having high blood pressure, then they should do the clapping till the time when they feel completely comfortable. Because क्या होता है, like suppose if I am taking a glass of water which is half filled, okay, and now I have to, that means the energy level of the glass is still here, and I need to bring that energy till here. So when we pour water, यहाँ तक जब वो रहेगा तब तक तो बहुत ठीक रहेगा, there is no problem. But उसके बाद भी डालेंगे तो वो energy, मतलब वो पानी बाहर गिरते जाएगा, right? So in our body also, if the energy is deficient or it is less to certain point, और अगर हम ये clap करते हैं, तो कुछ एक time के बाद we will feel कि oh, I am much better, right? But उसके बाद भी अगर हम करते रहेंगे, and if the energy becomes excessive, we will again feel, oh, I am not feeling better. Just stop it there. Your body will tell you everything if you will listen to your body. And जैसे हमारा ये topic है, health is in your hands. We can treat ourselves only if we listen to our body. जैसे अगर कोई बंदा रात को ठीक से सोया नहीं है, सुबह उठे हैं, headache है, so your body is giving you a signal. Your body is giving you a message that man, you need to sleep more. थैंक यू मैम। कमल साड़ा जी, कमल CS साड़ा जी, नमस्कार, आप भी कुछ कहना चाहेंगे?
म्यूट किया हुआ है साड़ा जी को। नहीं, साड़ा जी को अनम्यूट कर दिए थे। एक मिनट। हाँ अभी हो यस सर, बहुत अच्छा सेशन रहा। मैं तो सीखा हुआ हूँ एक्यूप्रेशर, मेरा पूरा फैमिली सीखा हुआ है। मेरे को बहुत अच्छा लगा। इट वाज नाइस सेशन। सबके लिए, सीए लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग चलते हैं डॉक्टर के चले जाते हैं, हम तो नहीं जाते, सीए लोग चले जाते हैं, जनरल आदमी जाते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा सेशन है। मैं तो ऑफिस में, सीए का ऑफिस है, लेकिन मैं आता तो एक्यूप्रेशर का 1-2 पेशेंट रोज ट्रीट कर देता हूँ। It's a very nice thing. Up keep practicing this along with your chartered accountancy. Thank you, sir. Thank you. Hariram ji. Yeah, thank you, Kejriwal ji, Sandeep ji, and our colleagues on this executive committee members, and very nicely arranging the seminar. And above all, many thanks to PRITEE ma'am for giving such a nice session for even more than 1 hour. And we really enjoyed your session and learned a lot. And we will try to do the practice as far as it is applicable and necessary to us. And we will be certainly benefited by us. Thank you. Thanks a lot. Thanks all the participants. Thank you so much. It's a very nice session. Really, it was a very nice session and very useful to us. Thank you. Thank you, ma'am. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ज्वाइन किया है। और मुझे लगता है कि सब कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करेंगे इसकी, जरूर और अपने ऊपर आजमाएंगे और इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगी। और हमको लग रहा है राजेश भैया तो स्टार्ट कर चुके हैं। हाँ, लिंग मुद्रा चालू कर दिया मैंने। वेरी गुड सर। ठीक है ना, ये सही है ना मैम? हाँ ठीक है, सही है, सही। थैंक यू। Okay, sir. Thank you, everybody. Thank you, PRITEE ma'am, and everybody for joining this webinar. And we will our next webinar on tomorrow at 11 with ACI and DTPA. Thank you. DTPA is also there? Yeah, sir. DTPA ने भी join कर लिया है हम लोगों को। अच्छा, very good, very good. So we will be 3 ACI, DTPA and CKCA. Good. So we will meet again tomorrow. Tomorrow 11 a.m. Okay. 11. Thank you. Thank you, everybody. Namaskar. Bye-bye. जी नमस्कार। Once again. नमस्कार। Thanks, Kishan ji, for giving an opportunity to me to join your inner circle. Thank you. Thank you, Kamal ji. Yeah. Bye. Rajesh ji, namaskar. Namaskar. Now we are ending our session. Thank you. Okay, thank you. Thank you.